introduction session on Python. So we'll be covering the introduction part and some kind of roadmap also. And first of all, I'll be introducing myself, and then I'll ask you guys about your preferences about language and all. Okay, like communication language. Obviously, in coding it will be Python. Not a cricketer. Okay. Okay, so myself, Sanskar Bhadoria. Currently, I'm working for Allen Digital as a software engineer, and previously, I have worked with Bright Gems, which is an edtech startup for uh, like they provide online courses and kind of thing, just like what to say, Whitehead Junior. Okay. Apart from that, I have been instructor in an academy, Masai School, and Bright Gems also. ठीक है. Okay. यार एक काम करो, like if some buffering or something is there, just clear your cache or update your Chrome version first and then join. Okay, for some it's clear, for some it's not clear. There's light glare coming behind you. Yaar, can't do anything with this. Wait. Mm, can you please sit opposite to light? My table is just opposite to that side. Wait a minute. Okay, I'll stop my video in a while. I'm just introducing myself, that's why it's turned on. Okay. Sorted now. Okay, so one thing, I'll not be opening my video first of all. I was just introducing myself. That's why it was open. Most of the time you'll be like watching my screen, which I'll be presenting to you guys. ठीक है. लाइट ऑफ कर दो. क्या देखोगे, लाइट ऑफ कर दूंगा तो. विवेक. ठीक है. Okay, so yeah, I've introduced myself quickly. Just let me know the communication language you want, Hindi, English, या फिर mix kind of thing. बताओ. My video will be off. English. I think English सबके लिए better रहेगा. Like my personal opinion. Mm, mix. Okay. English or mix would be better. Okay, so we'll go with like both of the languages. हिंदी भी यूज करेंगे and then like कभी कभी इंग्लिश भी. Okay. Okay, I'll be sharing my screen very soon. Just wait for a while. I'm comfortable with 4 languages. I don't know Gujarati. Okay. I'm presenting my screen. Just let me know if my screen is visible to all.
Let me know in the chat. We'll be going with both of the languages. Like we'll use English. ठीक है. I can see the votes for English more, so we'll be using both. ठीक है. तो today we'll be watching Introduction to Python. Okay. So first of all, what is Python? It's the straight question that it is a programming language. ठीक है. Programming language क्या होती है? We use programming language to communicate with the machine, right? So let's say this is my machine. ठीक है. And this is, let's say, you. And you want to communicate with your machine. So machine only understands, we can say that binary language. Or we can say machine language. ठीक है. Both of them means 0 1 1 0 1. So something like this machine understands. ठीक है. So Python is the mediator over here for now. Like it can be C++, it can be Java. Okay, JavaScript भी हो सकती है. But because we are learning Python, let's say ये अपना Python है. ठीक है. PY. We will learn Python and we will code in Python. The output of the code will be a binary language. Let's say 0 1 1 1 1 and so on, and that we'll feed in this machine to treat, to basically instruct or do commands for us. बताओ इतना क्लियर है? बेसिक, वेरी बेसिक. नहीं यार, मैं आगे नहीं बढ़ा सकता अभी. We'll go with very basic. My screen is visible, so अगर किसी को नहीं दिख रहा है, जैसे rejoin or something. सही है ना? मशीन को अंडरस्टैंड होती है बाइनरी लैंग्वेज. अपन पाइथन सीखेंगे. पाइथन में हम लो लेवल कोड करेंगे बेसिकली. ठीक है. और वो उसको मशीन कोड में बदल देगा. ठीक है. आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू इंस्ट्रक्ट और व्हाट से टेल मशीन व्हाट टू डू. ठीक है. सो पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन फॉर like it's very easy if you compare with all of the programming languages. ठीक है. I am writing some of the points of Python. ठीक है. Easy होती है to read and understand. Easy to read and understand. Okay, because from the code only you will be able to most of the times you will be able to get what we are trying to do in the code. ठीक है. Let's say print है ना. किसी किसी लैंग्वेज में वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है. जैसे जावा में होता है system dot println something. It's a very big line, but in Python it's very simple, that print. ठीक है. So in such scenario it's easy. Sorry. ठीक है. Read and understand. ठीक है. Python के क्रिएटर थे. लाइक बहुत बेसिक थ्योरी है, आपके काम भी नहीं आएगी, बट जस्ट नो. ठीक है. ही फोकस ऑन लाइक फिलोसफी. तो मतलब उन्होंने सिंप्लिसिटी को प्रायोरिटाइज किया था. सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी विच पाइथन बोथ हैव. ठीक है. तो इन पाइथन यू विल बी हैविंग, यू विल बी लाइक फीलिंग कि हाँ सिंप्लिसिटी है इन द कोड एंड क्लैरिटी. ठीक है. दैट्स व्हाई इट्स बेसिकली मोस्ट रिकमेंडेबल फॉर द बिगिनर्स.
ठीक है, ड्यू टू दिस इट्स रिकमेंडेबल फॉर बिगिनर्स. ठीक है, डोंट गो ऑन राइटिंग प्लीज. ठीक है, नूब्स. इनिशियली एवरीवन इज अ नूब, राइट? ठीक है. ओके, नाउ लेट्स सी सम यूज केसेस ऑफ इट, राइट? Okay, before jumping into that, just let me know if everyone is clear with the thing that I told. Yeah, abhi I can go with the keyboard typing, but like with the time when we'll be learning the concept, na tab ye zyada kaam aayega. Like it will be more easy for you to get by this. ठीक है. Sir, we have to make notes of this. Like it's your choice. अगर notes बनाने तो बना लो, but नहीं बनाने तो मत बनाओ. Like I think you guys will be getting the notes of every session, some high level notes by the team. ठीक है. Okay, let's see some use cases. Use cases will be first, we can say web development. ठीक है, why? To build backend of the websites. Backend of websites. ठीक है. Second use case is data science and AI. ठीक है. So in this we can say analyzing huge amount of data, let's say. Okay. Huge amount of data. Right. Next use case can be automation. Okay, this contains scripts to automate boring tasks. ठीक है. लेट्स से मुझे कहीं कुछ ऐसा करना है जो मुझे बार बार करना पड़ रहा है, राइट? तो फॉर दैट आई कैन राइट अ स्क्रिप्ट इन पाइथन टू ऑटोमेट एटलीस्ट दैट थिंग. ठीक है. बताओ, एनी डाउट? आई हैव सम कोल्ड. बफरिंग अलॉट ऑप्शन टू वीडियो क्वालिटी. नहीं यार, सबके लिए बफर नहीं हो रहा है, द थिंग इज. अभी तक तो आई एम फाइन. ठीक है. ऑल्सो लाइक स्टॉप doing some random chats, okay, because these things get recorded. Yeah, everyone just check your internet on like dofast.com or something. ठीक है. Okay, let's go ahead.
Okay, this is important to know. Python is an interpreted language. Okay, is an interpreted language. Okay, so interpreted language basically Python basically executes the line by line. Okay, अगर आपका code let's say 100 line है, तो Python will start from line by line, executing it, executing it, executing it. Okay, like this. ठीक है, सो थिंक ऑफ अ ह्यूमन ट्रांसलेटर. ठीक है, जो कि एक डॉक्यूमेंट रीड करता है और उसको ट्रांसलेट करता है, राइट? लाइक वी ऑल डिड दैट इन द इंग्लिश क्लास इन आवर चाइल्डहुड, है ना? We do read the sentence and then try to explain that thing, right? So it's like that Python. ठीक है, that's what Python interpreter does in your code, मतलब ट्रांसलेटर की तरह. Just clear your cache and update your Chrome, I'm telling. Otherwise some students can get face issue in this streaming and all. Is there any only difference between different compiler? Compiler is also, if the language is compiled, then the entire file gets run at a time. ठीक है, इंटरप्रेटेड मतलब वो वन लाइन बाय लाइन कंपाइल करेगा चीज़ों को. सॉर्टेड. ओके, आई एम राइटिंग जस्ट फीचर्स ऑफ पाइथन. ठीक है, ओके. ओके, इंडेंटेशन. पाइथन फॉलोज indentation to define block of code. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि पाइथन में हम इंडेंटेशन करते हैं टू डिफाइन ब्लॉक ऑफ कोड. दैट मीन्स कि लेट्स से दिस इज सम पार्ट ऑफ कोड, दिस इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ कोड जो कि हमें इससे अलग चलाना है. ठीक है, सो पाइथन फॉलोज अ सिंटेक्स विच वी कॉल इंडेंटेशन. ठीक है, सो व्हेन विल बी डूइंग सम कोडिंग यू विल गेट टू नो. अभी के लिए जस्ट गो थ्रू दिस सेंटेंस कि पाइथन फॉलोज इंडेंटेशन टू डिफाइन ब्लॉक ऑफ कोड. ओके, वी हैव सम बोर्ड रिमेनिंग अभी. Okay, so mostly what, like whenever you will be doing indentation, it will be in loops. These all things we'll be learning. ठीक है, अभी don't get in trouble because of the jargons. ठीक है, loops में, conditional statements में, right, functions, etc. ठीक है, and these things you will be using indentation there. Okay, because we have some board, let's use it. Okay, it also have comments. Okay, what are comments? Comments are the notes that you write in your code to explain what it like do. ठीक है, वो मतलब कोड क्या करना चाह रहा है वो आप कमेंट में लिख सकते हो. ठीक है, कमेंट विल नॉट काउंट एज अ कोड फर्स्ट ऑफ ऑल. Will not get count as code. ठीक है, they are basically to explain what your code block is doing. ठीक है,
It is represented by a single hash. This is how you basically represent the comment. Okay. So I'll be clearing this board. Just let me know if सबको कुछ कुछ समझ आया या नहीं. Let me know in the chat. Okay. Yeah, for multi-line comments, you can write that triple dot thing. Okay. One more thing, it's not necessary to write comments in your code. ठीक है. अगर आपका कोड बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड यू वांट कि मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ सो दैट समवन कैन गेट इट, देन एट दैट टाइम यू कैन ऐड द कमेंट. ठीक है. Will not be going fast. Because some of them are starting from zero. Okay, some of you might know कि हाँ क्या होता है. You guys can skip the class if you are like that, if you know the things. No problem there. But I think like there is attendance for this class. Ansh Agarwal, like you should check your system or just delete Chrome and reinstall it. Okay, multi-line comments is done. Let me clear this. Okay, first of all, just let me know if everyone is having VS Code in your system. बताओ. Yeah, I'll be sharing the roadmap. Don't worry. किसके पास VS Code है, किसके पास नहीं है, बस ये बता दो. So code is a like IDE kind of thing, the environment where you write the code. ठीक है. Some have, some do not have. So okay, do one thing. I'm just giving you guys 15-20 minutes. Install VS Code in your system first. We'll pause the class till then. ठीक है.
Let me share you that link. Okay. Some of them don't have it. So install it. I'm giving you 15 minutes for that. We can use web compilers, but I'll suggest you to install it at least. VS Code. ठीक है. प्रोग्राम इस पे ही करवाऊंगा वैसे तो मैं जहाँ तक है. आई सेंड यू द लिंक ना. अगर आपके पास विंडोज है तो इसमें कर लो, वरना मैं कहता हूँ यार. जिसका नहीं होता देन ही और शी कैन गो फॉर ऑनलाइन कंपाइलर्स लाइक दिस. इसका भी मैं भेज देता हूँ लिंक. PyCharm also work. No problem. I can solve assignments in C++. No, go for Python only. अभी तो because we'll be going through that data structure and algorithm. हम Python में ही पढ़ रहे होंगे. So there's a lot of difference of syntax in C++ and Python. For now, I'll be taking DSA. I don't know if I am the person who will take Munstag or not. Okay. So till that time someone is installing, if you guys have some doubt, you can come on stage and chat about your queries. Okay, then we'll continue. You can ask to add on stage, I'll approve, and then you can talk. Participants, we have 199 till now. Oh, okay. How many months you have to teach by then? I think it will take 5 months. Yes, yes, anyone can come on stage. No issues. Can we get recording of this session? You'll have to ask for the team for that. Ask to the team, like whosoever is the admin of your channel. There will be the option Mehika. Like if you can see here, just check. What about DSA? DSA will be going 5 months. According to me, it should be 5 months. बाकी देखते हैं.
This is the first session after orientation. Yes, Ankit. Hello. Yeah. सर आई वाज आस्किंग दैट कितने परसेंट तक हमें पाइथन कवर करना पड़ेगा इसके लिए? डीएसए कंप्लीट करने के लिए यस सर। यार पाइथन बहुत बड़ा है, पाइथन में बहुत लाइब्रेरीज होती हैं, बट वी विल नॉट बी कवरिंग एवरी लाइब्रेरी एंड ऑल, वी विल बी जस्ट गोइंग थ्रू द टॉपिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। तो उसमें कोई परसेंट नहीं है, हमें पूरा ही देखना होगा। यू नेवर नो फ्रॉम वेयर द इंटरव्यूअर विल आस्क द क्वेश्चन। ओके सो ओके थैंक यू सर। यस। अक्षता, दानिश। Just give me some time approving everyone. ठीक है, this is the first session so we can discuss some things so that आगे कोई conflicts ना आए between us. Okay, one Danish Ahmed. Okay. Let's go one by one. Hello. Hi, Sachin. Uh, Sir, I want to know what is the basic level when we are going to start the arrays topic. It will How? take, I think it will take 3-4 days अभी तो, Okay. or more than that. And sir, just one thing more. How many questions we are doing on each topic? Let's say on lead code, something like that. Um, I don't have any count of numbers how much we'll doing, but we'll be doing enough to get the topic. And sir, do you also will teach us DP or the advanced concept of DSA? Yes, we'll complete it. And sir, one more thing. Sir, I have done DSA 10 to 20% area and state in Einstein in Java. So, sir, can I continue doing DSA in Java or in Python? What do you suggest? See, हम लोग Python ही पढ़ेंगे यहाँ पे, but if you want to go for Java, just like you can do it. It's your thing. Uh, uh, yes, sir. Can you help me in sir, Java when I stuck in the code or something? No, I don't think I can help in Java right now because we're looking for Python only. And sir, one more thing. Do DSA batch and money state batch will run parallelly, or first we have to complete the DSA, then the money state batch? Not sure about Munstack. I'll be taking the DSA only. After that, what they will do, I'll have to ask them. Thank you, sir. Thank you for the answer. Yes, thank you. हेलो सर। Yes, hi. सर मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि पाइथन में हम लोग कितना टाइम लग जाएगा, उसको हम लोग डीएसएम जंप करेंगे तो एक टॉपिक वाइज टॉपिक कितना थोड़ा टाइम लगेगा हम लोगों को नहीं नहीं, डेटा साइंस में? कैन यू रिपीट पाइथन में क्या? एक्चुअली मैं ये कंफर्म कर रहा था कि पाइथन में हम लोग कितना टाइम लगेगा कवर करने में डेटा साइंस के लिए, और उसके बाद हम लोग जंप करेंगे आई थिंक डीएसएम है ना, तो नहीं उसमें यार, कितना टाइम लग जाएगा उसके बाद? अभी हम डीएसए करेंगे एंड डीएसए कंप्लीट करने में वी विल टेक 4 to 5 months। उसके ओनली बाद डीएसए मतलब ओनली डीएसए नो। पाइथन उसमें? अच्छा, उसमें पाइथन ऐड नहीं है सर?
पाइथन का टाइम कितना लग जाएगा? No, you are not getting it. Python is a language. In every language, you can do data structures and algorithms. DSA is a हम्म, topic. Okay, main topic is Python only. ठीक In Python, you are learning DSA. ठीक। ठीक और है. सर डीएसए के बारे में लोग चेक कवर करना है कुछ कंपनी, मेरे को आइडिया नहीं है उसके कि आगे क्या बाद, क्या चल रहा है if कैसे। you are in the full stack batch, then you will be going for that development wala thing, and else you will be learning data science. ओके Yep. ओके सर। Hello, I do have a question. Yes. See, so I'm right now coding in PHP and Node for the backend, and PHP in normal HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap for the front end. So, like, we do have we have to install a local server for the database for that language. So, similarly, do we have to do something for like Python? For Python, you'll have to install Python in your core file. Okay. Wait. Okay, from here you can like install and add to the path. Okay, Then your system will be able to get the thing. okay, just Like this जैसे I अपन have to Node.js में update. करते हैं ना, node for Yeah, npm yeah, terminal and all. yeah, correct, correct. It's Okay, just- got it. Got it. Okay, thanks. Okay, next. Okay, I think Mahika is done. Danish, do you have any doubt? Okay. Okay, I prefer chatting in the last of the session, but it's the first session, so going it further with this. Hello. Yes. One more doubt. Sir, I am confused between full stack and data science. So, what do you suggest? Which one to choose? Uh, yeah, it depends on you, like in what field you want to go. Hello. Yeah, Aditi, just let's go one by one. So, so Sachin, you yeah, will have to decide what you want to do. ठीक है, मैं तो full stack करता हूँ, तो my favorite is that, but someone can be good in data science also. Um, ठीक है. do I have to ask the question right now? Sorry. Hello, Aditi. Okay, I think some issues. Hello. Am I audible? Yes, you're audible. Sir, I wanted to ask the question. Like I am doing DSA in C++ right now. So will this program will be like not language like oriented and just DSA concepts, and we can use whatever language we want? Will be language oriented actually. Yes. See, guys, don't spam it, yeah. Sir, I didn't hear you properly. Yeah. So yeah, this program will be language oriented. But you can like if you're doing it in C++, you already know some concept, right? Concept remains same, just the syntax changes. Okay, sir. Yes. So like And sir, there should be no issue. do we have to like simultaneously write what you teach, or we'll get the notes and all later on? If you feel के तुम्हें note करना चाहिए तो कर लो, but it's not necessary. Although you will be getting notes from the team, तो ठीक है. Okay. Okay, will not be going to the stage further अभी के लिए.
आप लोग में से किसी डाउट है क्या? Whosoever in the stage right now. Yes, yes. So can you hear me? तो Yes, ये yes. तो सर मैंने लेट ज्वाइन किया तो मैंने अभी तक वो प्री वर्क कंप्लीट नहीं करा, सर कोई दिक्कत नहीं होगी ना? Pre-work as in? सर पाइथन प्री वर्क जो अभी दिया गया था हमें कंप्लीट करने के 39 वीडियोस। I think वो उसके लिए दिया होगा, मतलब सेशन से पहले पढ़ने के लिए. I यस don't think there will be issue. थैंक यू सर। Hmm. Hello. Hello, sir. Am I audible, sir? Yes, yes, you're audible. सर डीएसए इन जावा का ऑप्शन है क्या? लाइक मैंने प्री वर्क जावा का ही किया है। Yeah, लाइक मैंने फुल स्टैक ले रखा है आपको टीम को पूछना पड़ेगा ये चीज. बिकॉज लाइक पाइथन ही सिर्फ लाइव सेशन में तो पाइथन ही सिखा रहे हैं ना, इसलिए पूछा कि अलग हाँ. से कोई बैच है क्या डीएसए इन जावा का? You'll have मतलब to उधर ask. जावा पढ़ाएंगे? एडमिन से पूछ लेना, मतलब आई डोंट थिंक कि वहाँ पे है कोई. मतलब पाइथन में ही पढ़ाने वाले ऐसा? हाँ. यस. सर लाइक कितना फर्क आता है? लाइक मैंने जावा अब कर रहा हूँ तो कितना फर्क आएगा कॉन्सेप्ट में या फिर सिंटेक्स में तो बहुत फर्क सिर्फ है. जावा और पाइथन की सिंटेक्स में बहुत फर्क है. कॉन्सेप्ट्स हर जगह सेम रहते हैं. लाइक लॉजिक तो सेम रहेगा और अपने को सिर्फ कोड राइट करने में अलग होगा, कोड दोनों का अलग दिखेगा ऐसा क्या? यस, यस, यस. लॉजिक सेम ही होगा ऑब्वियसली. ओके सर। जस्ट लाइक यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस. क्योंकि अपन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, बट वी आर सेइंग द सेम थिंग, राइट? हाँ। Hello, am I audible, sir? Yes, yes. Yeah. So, sir, where we solve our DSA problems? Like Skillian provides some platform, or just we are go with the VS Code and Lead Code. Some. नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. इन्हीं में से कहीं पे करना होगा. So VS Code or like VS Code and Lead Code, we can prefer. हाँ, VS कोड पे कर सकते हो. लीड कोड अभी पिक मत करो. फंक्शन खत्म हो जाए उसके बाद लीड कोड कर लेना. ठीक है, तो सर फिर हमारी मतलब परफेक्शनेस कैसे आएगा प्रॉब्लम में, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व में, क्योंकि हम टेस्ट केस तो पास ही नहीं कर पाएंगे VS Code में. नहीं तो इफ यू आर डन विद दैट प्रॉब्लम यू कैन सर्च ऑन लीड कोड एंड ट्राई ना. हम क्लासेस में कैसे करेंगे? क्लासेस में वील नॉट बी डूइंग लीड कोड. लाइक वील डू वेरी सिलेक्टिव क्वेश्चन ऑन लीड कोड. हर Then we क्वेश्चन. will just go with the VS Code. यस. VS Code में ही सर. तो सर गारंटी नहीं है ना प्रॉब्लम जस्ट पासिंग द टेस्ट नॉट. गारंटी कुछ नहीं है भाई. जस्ट ट्राई इट आफ्टर द क्लास. अच्छा. हाँ, मतलब मैं मोस्टली ये प्रेफर नहीं करूंगा. आई प्रेफर प्रोग्राम एज. आप लोग को भी इसको डाउनलोड कर रहा हूँ सो दैट यू कैन जस्ट ट्राई इट आफ्टर लाइक बिफोर. मतलब आपको इसकी जरूरत ना पड़े कोई इंटरनेट वगैरह की. कैन ट्राई. क्वेश्चन कहाँ से पिक करेंगे सर? क्वेश्चन मैं बता दूंगा कौन से पिक करना है. एंड यू गाइस आल्सो कैन ट्राई ना आफ्टर दैट. जीएफजी वगैरह पे जाओ, इतने सारे क्वेश्चन पड़े हैं. या श्योर वी विल डू दैट. यस. ठीक. मोस्टली वील बी डूइंग स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो इंटरव्यूज में एक्चुअल में पूछे जाते हैं. बिकॉज 4-5 महीने में अपन इधर उधर के हर प्रॉब्लम कवर नहीं कर सकते. नो इट. फिर भी हम कितने प्रॉब्लम कवर कर लेंगे मिन टू मैक्स? आई डोंट नो द नंबर बट वील डू इनफ टू गेट द कॉन्सेप्ट. फिर भी एवरेज 100-150. नहीं यार, नॉट श्योर. चलो ठीक है, थैंक यू. ठीक है. Guys, just remove this issue buffering and all. ठीक है, मतलब इंस्टॉल कर लो क्रोम वगैरह नया वाला और कैश क्लियर कर लो. जस्ट क्लियर योर कैश. ओके. Let's go to this again.
Okay, let's see a very basic program. Print of hello world. Okay, this is the first program that every programmer do. Okay, so print is the statement and it takes something in it and then it will be a correct syntax for Python. Okay, so what this will do, this will convert this code into a machine code and then it will get feed in this, and after that you will be seeing the output. Okay, if you say, let's say PRI, I did capital over here, so that is not a function in Python, so that it will throw an error. Okay, this is not defined because उसको पता ही नहीं Python में ये क्या होता है. ठीक है, so it's a case sensitive language. Okay, so just do one thing, अपने किसी भी ऑनलाइन कंपाइलर या फिर VS कोड में अपना अपना प्रिंट फंक्शन चला के देख लो एक बार. Everyone. DSA is a part of Python. Don't take different Akshata. Okay, we'll be covering the introduction to Python, then we'll jump to DSA. Right, I think I'll be completing this in 4 or 5 sessions, and after that we'll jump to DSA. अरे इस पे कर लो, wait, I'll just send you the link. VS Code नहीं है तो इस पे ट्राई कर लो. You can try installing after the class VS Code. After the class, just see a YouTube like how to run Python file in that VS Code. So what you need to do is, first of all, you will be installing VS Code in your system. Then you'll have to install Python, and then you can run over there. There is a run button in the VS Code, top right, like top nav bar के right में देखोगे तो run button आता है एक. तो वहाँ से you can run your file, create any file, main.py or something. Okay, .py is the extension for the file that we use. Okay, let me write this also. Makes sense. Python file extension .py. Till the end Q&A होगा. Can repeat that again. Repeat what? Download Python also. I'm sending you the link. ठीक है, अगर किसी का नहीं चल रहा है तो just try go with the program is good, like online अगर चलाना है तो. Okay, let's see variables and data types. ठीक है, what is a variable? We can say it is a labeled storage box, let's say. Okay, so what happens is, if this is a system, right, it has some memory, right? In this, the data is stored. So variable is a labeled storage box. A labeled storage box. Okay, just imagine a shelf where some containers are there, same type of containers, right? And it's not transparent and all. Okay, one is for, let's say, tea, one is for sugar, one is something XYZ. Okay, so आपको sugar चाहिए होगा, so you'll just wash the label and you will pick it. You will not worry about कि इसमें है भी कि नहीं, right? So it is a labeled storage box. So if you are defining some data, let's say you are saying data is equals to 10. So what will happen?
in this memory, there will be a creation of a void box. Okay, void box as in the memory space, and in that this data will get stored. This 10 will get stored, and the name of this box will be data. So if you want to search for 10, you will search data. Okay. So let's say if you're saying name, or say anything, like let's say x is equals to 5. ठीक है, तो मेमोरी के अंदर क्या होगा? This is your entire memory, and in this there will be a box again in which the data will be 5 and its name will be x. This is variable name. अच्छा, variable क्यों बोलते हैं? Because you can name it anything you want. ठीक है, variable name is x and inside this is the data. This is the data. Okay. And now they can be the types of data, right? Data can be integer, data can be string, data can be boolean, right? So let's see data types. Data types. Okay. So fundamental data types are string, numbers. Okay, numbers. In the numbers there is some division, like they can be integers, floats. String means like what to say, name or something which is in your double quotes. Let's say skills, right? Apple, right? This is the kind of string data structure. So let's say you want to store your name in the data. ठीक है, तो how you will assign name is equals to whatever your name is. ठीक है, let's say Arun. ठीक है, तो उनको ऐसे स्टोर करोगे, उसको 1 2 3 4 5 तो नहीं लिखोगे, राइट? ठीक है, नंबर्स में डिवीजन है, इंटीजर फ्लोट्स कैन बी देयर. इंटीजर इज बेसिकली द होल नंबर, है ना? जैसे 10 हो गया, -5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, राइट? एंड फ्लोट्स कैन बी 1 2.54, राइट? 3.1. ये अदर डेटा टाइप इज बूलियन. ओके, रिप्रेजेंटेड वन ऑफ द वैल्यू, मतलब कोई भी ये सिर्फ 2 वैल्यूज रख सकता है, इधर ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स. ओके, boolean is basically used when your code is kind of decision making. ठीक है, एक टाइम पे we'll learn, like, ठीक है, decision making of code. Okay, now what is decision making? Let's see. So if you can see, this is the platform, right? Streaming platform. Now these are the list of students. Because I'm admin, this is giving me an option of add on stage. Because you are a user, you will not be having this option, right? तो मतलब जिसने भी ये प्लेटफॉर्म बनाया है उसने कहीं ना कहीं ये कोड लिखा है कि अगर एडमिन प्लेटफॉर्म चला रहा है तो ये ऑप्शन दो उसको, एल्स मत दो, राइट? सो देयर इज अ इफ एल्स देयर. So this is a basic example of conditional programming. ठीक है, नॉट अ स्ट्रेट कोड. ठीक है, सीधा सीधा कोड नहीं है, वहां पे एक कंडीशन लगी है कि एडमिन है तो ये बटन दिखाओ, एल्स मत दिखाओ, राइट? नेक्स्ट बताओ, इसमें कोई इशू है क्या? वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप. आप डिस्कॉर्ड पे एक मैसेज डाल देना फॉर नोट्स. आई डोंट नो देते तो हैं. Any issues in data types, like basic definition of data types and all? If you're not able to code in like VS, then go for Programmers. Okay, or you can search for online Python compiler and go for it.
ठीक है. We saw variables and data types. Variables is a labeled storage box in the memory. ठीक है. So मैंने ये मतलब visually represent करा है ऐसा. तो if this is the memory, then if you are saying data is equals to 10, so there will be a block which will get assigned. ठीक है. मतलब आपने बुकिंग कर दी एक तरीके से रिजर्वेशन पे उसका नाम है डेटा और उसके अंदर 10 चला गया. ठीक है. सो दिस डेटा इज द वेरिएबल. ठीक है. इसको हम वेरिएबल बोलेंगे. x is equals to 5 में x is the variable. Then data types. Now जो डेटा उस मेमोरी में स्टोर हो रहा है उसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, है ना. स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, बूलियन हो सकता है, राइट. Some other data types will see later. नहीं, मतलब you can use single quote also. Most of the time you can use single quote. अभी पाइथन डाउनलोड मत करो, लाइक अगर नहीं चल रहा है तो उस पे चला लो ऑनलाइन कंपाइलर पे. Data type do not takes anything. Data type, it's clear from the name, it's the type of data. ठीक है. डेटा के कितने टाइप हो सकते हैं? We saw 3. ठीक है. डेटा नंबर हो सकता है, राइट, बूलियन हो सकता है, एंड स्ट्रिंग हो सकता है. Okay, we talked about data types, not data structures. Just clearing it. ठीक है. Data structures we'll see when we'll start with DSA. ठीक है. इसको भी आप DSA का पार्ट ही लो. Like you will be using, obviously you will be using data types and all in DSA also. That means admin has given you the right to access that. That's a different thing यार. At the end कोड में ये लिखा है. ठीक है. उसने कुछ एक्सेस दिया होगा तब उसके पास कोई फ्लैग आया होगा, राइट. उसके बेसिस पे they added this condition. How many classes will you do basic Python? I think we'll go with 3-4 classes. Jupyter notebook is also fine, no problem. ठीक है. Okay, so till now I just want to know if everyone get at least 80% of what I'm telling. Just let me know in the chat. Just talking about 80%, मैं 100 भी नहीं बोल रहा हूँ. Just let me know in the chat. अगर आपको 80% भी चीजें क्लियर हुई हैं तो just don't skip this question, okay? Because I need to know. Because some people are not getting the basics also, that's why. ठीक है. Not in this class, like when we'll be doing DSA also, after like we'll be doing some complex topics. At that time also I'll expect कि आप 80% get कर लो मेरा minimum. ठीक है. I'll not ask for 100. Make it 100 after the session by practicing. ठीक है. I think so. Reconnect. ठीक है ना. डेटा टाइप्स अभी हम लाइक
I'm just giving you the basic context. ठीक है, मैं भी कोई कोडिंग आपसे नहीं करा रहा, ठीक है. आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप कोडिंग वगैरह करो अभी, ठीक है. आई टेल यू जब करनी होगी, आई गिव यू क्वेश्चंस आल्सो लाइव. Okay, now let's see collections also. Okay, ठीक है. Collections क्या होता है? So Python also give you like a functionality to keep data together. ठीक है, data together जैसे कि let's say you are let's say 184 audience, right? 180 like around 190, ठीक है. तो ये लोग कहीं ना कहीं एक डेटा में स्टोर्ड है, राइट? ऑल ऑफ देयर स्टूडेंट्स, राइट? तो उस डेटा को कॉल करने के लिए आई विल हैव टू कॉल अ ग्रुप, एंड दैट ग्रुप इज कंसिस्टिंग दिस काइंड ऑफ लाइक स्टूडेंट्स, है ना? तो वी कैन से टू स्टोर ग्रुप to group data together, right? नाम से भी क्लियर है, collections, right? To group data together, right? Example, list of students in a school, है ना? किसी स्कूल में भी हो सकते हैं, if that's an edtech kind of like this Skillian, right? जहाँ पे कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होता, है ना? Okay, so some types are that we'll be watching it later, but I'm just introducing the name. List, tuples, dictionaries. ठीक है, हम इन तीनों पे अलग अलग सेशन करेंगे, एक एक पूरा. सो जस्ट आई वांटेड टू नो यू द नेम, ठीक है. लिस्ट क्या होता है? एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, ordered collection of data, right? And this is mutable मतलब you can change that data. So अभी ये जो नीचे आ रहा है 174 ऑडियंस इन द यूजर, दिस इज अ लिस्ट. क्यों लिस्ट है? बिकॉज आप में से अगर कोई भी स्टेज पे आएगा तो 178 हो जाएगा, राइट? देखो 175 हो गया, है ना? तो इट इज म्यूटेबल, इट इज अ लिस्ट. टपल क्या होता है? इट्स लाइक लिस्ट ओनली बट इट्स इम्यूटेबल, ठीक है. अगर आपने एक बार टपल बना दिया, यू कैन नॉट चेंज इट, राइट? डिक्शनरी इज बेसिकली अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स. Okay, if you're not getting it, it's okay. We'll take a different session on dictionary, list and tuple. Okay, key value pairs. ठीक है, ये दोनों तो सेम से ही हैं, मतलब दिस इज इम्यूटेबल, दिस इज म्यूटेबल, दैट्स इट. की वैल्यू पेयर्स क्या होते हैं? लेट्स से कोई स्टूडेंट है, लेट्स से हर्ष, ओके. तो हर्ष का एक डेटा होगा. अब सब स्टूडेंट्स का कुछ कुछ डेटा होगा जो कंपनी रखती है अपने पास, राइट? लेट्स से योर नेम हर्ष, ठीक है. एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो रहा होगा क्योंकि नेम है, राइट? बैच स्टोर हो रहा होगा, राइट? August 25, and some things like email, right? XYZ, और भी कुछ चीजें हैं. ऐसे ही किसी दूसरे बंदे का भी होगा, राइट? अभिमन्यु का भी सेम चीज, कुछ डेटा होगा, बट ये चीजें अलग होंगी बस. बट नेम, बैच और ईमेल उसका भी होगा. मे बी ईमेल नहीं भी हो सकता है, नेम बैच तो होगा, राइट? सो डिक्शनरीज आर लाइक की वैल्यू पेयर्स जो ऐसा डेटा स्टोर करती हैं. अब ये एक डेटा है जो लेट्स से किसी डेटा में पड़ा हुआ है, लेट्स से स्टूडेंट डिटेल्स. तो अगर किसी को हर्ष का बैच जानना है तो ही कैन गो फॉर स्टूडेंट डिटेल्स डॉट बैच. नेम जानना है तो स्टूडेंट डिटेल्स डॉट नेम, ठीक है. इसी तरीके से वो यहाँ पे रेंडर मतलब डिस्प्ले करवा रहे होंगे, राइट? अभी इसमें कोई डीप नहीं जा रहा है, जस्ट इंट्रोडक्शन.
ठीक है, कलेक्शंस में कोई इश्यूज है क्या अभी तक? You'll get to know the use cases of DSA. This will consume your data structure ना, मेमोरी खाएगा ये चीज. Most of the students are comfortable in English, so I'm not picking any particular language. ठीक है, कलेक्शन पे हम एक एक सेशन ले लेंगे, डोंट वरी. How many of you are from Bangalore, like in Bangalore right now? Set is also a collection. Set, like from the name, it's clear that set will not be having duplicates in itself, right? 1 2 3 is a set. 1 2 3 3 is not a set. So you can manipulate your list to make a set. Okay, not coming on, like I'm not coming on set right now. ठीक है. Let's see loops now. Okay, this is not the topic coverage. ठीक है, ये मत सोचना. Just going through every topic that we will be learning. ठीक है, from the name it's clear कि loop मतलब कि एक ही चीज बार बार करना, right? So let's say if you want to print number from 1 to 1 lakh, तो अभी मैं बोलूंगा तो we will be doing it like this, right? 1 then print 2, but ये 1 lakh बार लिखना पड़ेगा. So we'll see some code जो इसको automate, like it will automate this code printing thing, right? Only this will change, right? So if you say कि definition क्या है, तो we can say a repeat a block of code, basically. Repeat a block of code, right? ठीक है, लूप में दो टाइप अपन देख लेंगे, फॉर लूप एंड वाइल लूप. ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, हाउ टू रन इट, हाउ टू रन दिस, विल नॉट सी इन दैट लाइक इन टुडेज क्लास. ठीक है, लूप हो गया, देन इट्स ऑपरेशंस विल सी. ठीक है, ऑपरेशंस में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आ जाएंगे थोड़े से. लेट्स कॉल इट ऑपरेटर्स. ठीक है, अर्थमेटिक, कंपैरिजन एंड लॉजिकल. ठीक है, अर्थमेटिक में बेसिक मैथ्स वाले. ठीक है, एंड कंपैरिजन में बेसिकली दिस इज टू चेक इक्वल टू. ओके, दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज लेस देन. ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, एंड देन लॉजिकल, राइट? एंड और नॉट. ठीक है, ये भी हम डीप में देख लेंगे क्या होते हैं सब. ये सब तो आई थिंक दीज ऑल यू नो, राइट?
and or not we'll see when we will be covering bit manipulation. Okay, ठीक है. इतना सब पढ़ने के बाद then we'll go to functions. Functions क्या है? Like it's a reusable block of code. मतलब some code that you can reuse. ठीक है, let's say आपने एक फंक्शन लिखा to calculate average. ठीक है, let's say हमने ये फंक्शन एक बना रखा है जो कुछ तो हमने अपने को लाइक एक लिस्ट या फिर सम नंबर्स का एवरेज निकाल के देता है, and you want to do it again and again, so you will just create a function and you will call it again and again instead of writing that code. ठीक है, बार बार वो कोड लिखने की जगह पे. ठीक है, let me know if there's any doubt till yet. Iterations and all I'll not tell in today's class. जब हम for loop while loop देखेंगे तब we'll see, because some of you I know कि आप लोग को आता है सब कुछ, right? कुछ लोगों को, but not everybody is like starting from the mid, right? Someone is starting from zero. I'll have to take care of him or her also now. We cannot go little fast. My speed will be like this only in the entire journey of yours. Either it's a complex topic or it's a simple topic. Just letting you know. Okay, because I'll have to keep take care of that student also जो कम समझ पा रहा है, right? Python is enough, man. You can go for DSA with Python. नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. डू वन थिंग, जो उन्होंने वीडियोस भेजे थे लाइक द एंड द डॉक्यूमेंट दैट दे विल शेयर फॉर द सेशन, उसको पढ़ लेना, बिकॉज वी कैन नॉट रिपीट द थिंग्स. ओके, और आई गिव सम ऑफ रिविजन काइंड ऑफ थिंग इन नेक्स्ट क्लास आज का. oops concept no, we'll go to DSA only. oops concept you can learn like YouTube वगैरह पे देख लेना, या फिर कोई तो पढ़ा देगा. मतलब अगर they will if they'll ask me I'll teach you, but we'll have to complete DSA first. Math stuff, obviously like you will be using maths while solving problems. In most of the problems there is math. VS Code में रन करने का एक वीडियो देख लेना. I'm telling you verbally what you need to do is just install VS Code, right? Install Python. After that go to VS Code. यार मेरा नया प्रोजेक्ट खोलना पड़ेगा मुझे. वेट, ठीक है. आई होप माई स्क्रीन विजिबल. ठीक है. So let's say if we create a file here, main.py. Okay, the .py should be there. Already I don't replace it. Okay, write your code here. Let's say print my name, and there's a run option here.
click on it and you'll see your output here. ठीक है, try it once. If you're not able to, then go for this program. It's good, or so many online compilers are there. अभी तक तो हाँ सारे लेक्चर्स मैं ही लूंगा. मे बी यू गाइज विल बी गेटिंग सम mentorship classes from someone, but I'm not so sure in this. Yeah, no assignment for today class. Just go through the concept. If you get that, document of this thing, introduction, बस पढ़ लेना उसको and try to hit at least print statement in your compilers. Assignments मैं नहीं दूंगा. You'll get to know in group. मतलब admin भेज देंगे I guess. कुशाग्र का तो नहीं बताया यार, वो पढ़ाया कि नहीं. Maybe you'll get some mentorship classes. It will take 4-5 sessions अभी. I'll just discuss with the team के किस पेस से जाना है. I don't know about test dates and all. These queries you can ask on like just tag that admin and ask on the Discord channel. Okay, I approved some guys on the stage. Sir, I have a small doubt, sir. Yeah, please. Sir, could you please say again how to merge Python with VS Code, sir? How to match? Means, sir, just before you did know, sir, like you opened VS Code and again you open file like that, no, sir. Yeah. So when you open VS Code ना, let's say new window, ठीक है, तो यहाँ पे just hit on new file and create a file main.py or something. Main.py, sir. हाँ. Okay, sir. Okay, sir. Name can be anything यार. Main के अलावा कुछ भी हो सकता है. Okay, sir. Right, sir. Yep.